Greetings from SDMIC classes. Nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. We continue with the chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts, Part 8. Hope you must have watched the previous classes. I believe you all must have understood. I request you to pay attention. We'll continue now. We were discussing some important adjustments in the balance sheet. Once the first trial balance is prepared, and after all, whatever the adjustments are, important adjustments are coming, that needs to be accounted, and the effect should be given in the profit and loss account, trading account, profit and loss account, balance sheet, and which account it should take, whether to take debit it or credit it, whether to be taken to the liability side or asset side. This we were discussing. Now let us continue with the thing. 9 points we already discussed. Closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, income received in advance, that is pre-received income, income receivable, bad debts, provision for doubtful debts, reserve for discount on debtors, and depreciation. These 9 important adjustments we already discussed and shown the examples how to do that, how to make that entries. So now today we will discuss interest on capital, interest on drawings, interest on loan taken, then interest on investment and loan given, then goods destroyed by fire, and whether it is insured. If it is insured, then what effect should be given, and if it is not insured, that is uninsured goods, what will be the effect given, and goods stolen, goods distributed as free samples, goods goods withdrawn by partners for personal use, and unrecorded purchases and unrecorded sales. We discussed this up to 16 points today. That means from 10 adjustment, there are 3 adjustments, and 11 point, then 12 there are 2 adjustments, and 13, 14, 15 and 16, 7 important adjustments we will discuss today. So let us start one by one. So first we will take interest on capital. In some partnership firms, when the partners invest their money into the business, they take some interest on that, and that point will must have written in that agreement, that partnership deed. You know what is partnership deed, or everything we have discussed. And suppose if it is written, it is mentioned that the partners can take interest on their investment. It may be like for the purpose that now when they are putting the money in the bank fixed deposit, they can earn some interest. So but the purpose is for putting the money in investing the money into the business means to earn profit. So but some firms say that okay, you can take that partners can take some interest. In that basis, the entry will be that if it is written on in the partnership deed, then interest on capital will be like this: show to the debit side of the profit and loss account, because interest given to partners on the investment that means on the capital is an expenditure to the firm. और business के लिए वो expenditure है, and it can be either added to the capital account or taken to the current account. That means capital, if it is taken on the if they are maintaining a separate account, current account, under fixed method. This also we have already discussed, a fixed method and a fluctuating method of maintaining capital accounts. So if it is if they are making if they are maintaining the capital accounts in the fixed method, then there are they will have to maintain one capital current account, and if they are maintaining in such way, then it should be credited to the current account. Suppose if they are not
maintaining current account, that is they are maintaining their capital under fluctuating method, then the interest on capital will be added with the capital account. So that also means that I have shown means with the examples in that when we were discussing partners maintaining of partners capital account under a fixed method and a fluctuating method. Now let us I will show you some example of this making that entry on the interest on capital. Let's see. Now adjustment 10th, interest on capital. I have taken shown two partners in this. There can be many partners, but I'm just for the purpose of taking it, since it is a partnership concern, I am taking two partners. So now the interest on capital employed by A, capital fund money invested by A is 50 lakhs, and interest allowed as per that partnership deed is 5% per annum. So interest on capital employed by A 50 lakhs and interest 5%, it is 2,50,000. So now capital employed by B is 50 lakhs and interest on that is 5% per annum, that is 2,50,000. Suppose if capital employed by B is 40 lakhs, so it should be 2 lakhs, like that it is. But here I am taking that means partners have put their capital or equal amount. It can be various ways. So the profit sharing can be different. It can, if it is 30 lakhs, then sometimes some partners may say that no, you won't charge. We will not. That firm will not pay interest on your capital because you have invested less amount. That can be. That depends upon their terms and conditions set in that partnership deed. So अगर उनको अगर कोई कम इन्वेस्टमेंट करे रहेगा तो उनको इंटरेस्ट की जगह पे और कुछ ये देंगे, या नहीं तो फ्लैट मीन्स सबको कैपिटल में इंटरेस्ट ले सकते हैं करके. कोई 50 लाख डालेगा, कोई 20 लाख डालेगा, कोई 5 लाख डालेगा, 10 लाख, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, उसके हिसाब से होगा. और कितना जो इसका पार्टनर का कैपेसिटी है उसके अनुसार वो डालते हैं. नॉर्मली मीन्स वो इक्वल अमाउंट डिपॉजिट इन्वेस्ट करता है. तो इसके लिए मैंने ये जस्ट शो किया है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इक्वल अमाउंट ही इन्वेस्ट होना चाहिए. किसी का 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख 30 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है. But for the purpose of just making you means just make it simple, I just put it that both the partners, partner A and partner B, put their capital as 50 lakhs each. So now the interest on that is 2,50,000 and 2,50,000 at the rate of 5% per annum. So now total interest is 5 lakhs. Now where the entry is taken, just I'll show you. Take into the trading profit and loss account, trading profit and loss account. 10th entry A, interest 10th A 1, interest on capital 2, means that is debited to profit and loss account. Interest paid to A 2,50,000, interest paid to B 2,50,000. Both the totals are taken to the outer column. That is, this is inner column and this is outer column. Outer column में ले लिया, this is taken the outer column. That means it is debited to the profit and loss account. And now just see, credited to the balance sheet, means credited means it should be added. See, in this is this method is taken as a fluctuating capital method. Capital account is maintained on a fluctuating capital account method. So A's capital is there 50 lakhs and interest on interest on capital is 2,50,000. So it should be carried for like 52 lakhs 50,000. So now then B's capital is 50 lakhs and add interest on capital is 2,50,000. Suppose if they are not maintaining under a fluctuating method, they are maintaining as a fixed capital method, then it will be taken here under partner's current account. Like
here it will be interest on capital, it will be 2,50,000. A's capital account, it is credited to 2,50,000. B's capital account ka niche means ये आ गया, means it should be interest on capital 2,50,000. So now you understood. Now, so in that case it will not be added here. If it is a, it will not be added here, because it will not be added here like this, because it is taken in the credit side of the partner's current account. Okay, so you understood that, no? So here it is taken in the profit and loss account, debit. This entry will be there, and then if they are maintaining the capital as a fixed capital method, then this capital will remain the same. This 50 lakhs and the 50 lakhs, whatever the adjustments are coming, that will be taken to the other adjustment coming to the, it is taken to the partner's current account. So here it is taken, interest on capital is taken 2,50,000, 2,50,000 each. A's capital account 2,50,000, B's capital account 2,50,000 interest given. And in case if they are maintaining a fluctuating capital method, then it will be taken here 2,50,000. It is added to the add interest on capital, add interest on capital. Okay, so now the total is 52 lakhs. If there are no adjustment, it will be taken on the outer column, 52 lakhs 50,000. So now this point, I think you understood this 10th one. Okay, interest on capital is shown that it is debited to the profit and loss account and credited to the partner's current or capital current account, or if they are maintaining on a capital account on a fluctuating method, it will be added to the capital, add interest on capital. Now interest on drawings. So just imagine the 10th second point, interest on drawings. Who draws? Partners draws the money or kind. So partners, if they withdraw cash for their personal use, that is called as a drawing. So when they are drawing some amount from the firm, a particular percentage of interest will be charged on their drawings. It's not necessary if it is not written on the partnership deed. If it is mentioned on the partnership deed, then interest on drawings are charged. So let us work out something. The interest on drawings. So drawings of A for the year is 1,50,000, and interest means 8% or 6% or 10%, whatever it is. That depends upon the firm's decision, what they mention in their partnership deed. So here taken as an 8%, means as an assumed it is at 8%. Okay, normal rate of interest to FD is 6 to 8%. So 7% or 8% means if it is a cooperative bank, it is 8%, 9% like that, or if it is a nationalized bank, it will be 6% to 7% like that, and private bank 7% like that it is. And that also the rate keep changing depend upon the RBI's inflation control and all. So that you will come to know later. So now this is drawings of A is, I have taken it as a 1,50,000 as an example. So on that interest on drawings. So now just see that interest on drawings. Here interest on capital is an expenditure to the firm, an expenditure to the company. So here interest on drawings is what actually? Interest on drawings is an income to the business or income to the firm. Okay, so just means understand the difference. So interest on drawings. So what is the interest on drawings? 1,50,000 and 8% per annum is 12,000 rupees. And drawings of B, here it is 12,500 के हिसाब से he has drawn per month. So 1,50,000. Here 10,000 के हिसाब से B has drawn. So interest on drawings at the rate of 8%, 9,600 per annum. So total it is 12,000 plus 9,000, 21,600. So now let's see how the
adjustments are given, adjustment entries are given. So now, since it is an income, it should be credited to the profit and loss account, and I'll show you. That means that then only you will come, means it will be clear. So this is a 10th point, second adjustment. Let us see 10. Okay, now see, interest on drawings, 12,000 A and B 9,600, total 21,600. It is taken on the inner column. See these two things, 12,000, 9,600. So total it is coming 21,600. So since it is debited to the credited to the profit and loss account, and there should be a corresponding debit effect should be given. So that means where it has to be taken. Just see that in the balance sheet. So less drawings. We have taken here adjustments, drawings of A 1,50,000, drawings of B 1,20,000. So what here we have taken here, drawings less drawings of B A 1,50,000, drawings of B 1,20,000. Now interest on drawings is this 12,000. So like that, whatever is taken here, 12,000 A and 9,600 B. So 12,000 here it is taken, and 9,600 taken here. And if there is any goods withdrawn or good withdrawn, then it is again reduced, deducted from here, if they are maintaining that capital under fluctuating capital method. And if it is a fixed capital method, then there will be the partners will be maintaining a partners current account. Then there will be this partners current account will be debited. So interest on, because here it is credited, okay, so there should be a corresponding debit that will be taken into the interest on drawings debited, partners current account debited, and here it is credited. So understood that the profit and loss account is credited because it is an income to the business and expenditure to the partner. Okay. So interest on drawings is credited here and debited to the partner's current account. Or if this is done only if they are maintaining a partner's current account under fixed capital method, and if they are not maintaining under fixed capital method, it will be a fluctuating capital method. If it is a fluctuating capital method, it will be taken here like this. Under fluctuating capital method, it will be taken here 9,600 and 12,000. Okay, so the second point is also clear. Now the third adjustment is interest on loan taken from partners. So interest paid to partners. Interest on loan taken from partners is an expenditure to the firm, because in the company, the business or the firm has to give interest to the partner. Whoever it may be, means if the loan is taken from anybody, the interest paid is an expenditure. So how that here I have shown that loan taken from the partner. Loan taken from partner A is 1 lakh, and interest mentioned under the partnership deed, interest payable to partner is 10%. It may be different. It may be 5%, 6%, 8%, or whatever it may be. So here I have taken 10%. And loan taken from B is 3 lakhs. Interest at the rate of 10% is 1 lakh is 10,000, and interest on loan taken from B is 30,000. The total is 10,000 plus 30,000, 40,000. Now the adjustment entry will be like this. It is debited to the profit and loss account. Interest on loan taken from partners or from any outsider also, means interest paid is an expenditure. Interest paid by the company is an expenditure. So the interest paid, interest on loan taken from partners, partner A 10,000
interest paid 10,000 and partner B 30,000, total 40,000 taken on the outer column. So it is debited, and if it is paid before on or before 31st March, the second entry will be automatically taken to the bank account or cash account. It is paid by cash. Normally it won't, nowadays it won't be paid by cash, it will be paid by check only, means or bank transfer, online transfer. So then that entry, the second entry is already taken to the bank account, and if it is not paid before 31st March, then it should be carried forward. Then it will be paid in the next financial year, means from after 31st March, from 1st April or next year. So that then this interest will be added to their principal amount. Okay, so what is that principal amount? Loan 1 lakh and here loan 3 lakhs. So let's see how that entry is made. The first entry, debited to the profit and loss. This will become, this expenditure entry will come, and if it is paid before on or before 31st March, the second entry is already taken to the bank account, and if it is not paid, it should be shown into the balance sheet. It should be added to their loan account. See 10th point, third adjustment. Loan taken from A 1 lakh, interest at the rate of 10%, 10,000, total 1 lakh 10,000 is carried forward. You understood? No. So that 10,000 effect is given here, and the loan taken from B is 3 lakhs, and interest at the rate of 10% is 30,000, 3 lakh 30,000. So this should be payable to him. Now if the interest part is paid 10,000, then the balance in the next year, and then it will be 1 lakh again. Or if it is 30,000 is paid, then or the entire amount it needs to be repaid, then the total 3 lakh 30,000 should be paid. Here 1 lakh 10,000 should be paid. So that entry will be like this. This will automatically come because this is a balance loan taken, and this is an interest taken. It was not mentioned in the trial balance, so that is the reason this adjustment entry is passed. Okay, समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर जब मीन्स लोन जब ये लिया था तो लोन का एंट्री आ जाएगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री नहीं दिया था, बैलेंस शीट में नहीं दिया था, उसका प्रोविजन नहीं किया था, तो उसका जो इंटरेस्ट का जो प्रोविजन करने का फर्स्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद में मालूम पड़ गया ये जो इंटरेस्ट का एंट्री नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, सो दैट विल बी डेबिटेड, तो उसका डेबिट किया, और क्रेडिट इफेक्ट उसका जो पेमेंट बैंक से दिया नहीं था, कैश और बैंक से पेमेंट नहीं हुआ था, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में जो जितना पेमेंट देने का है 1 लाख देने का, 1 लाख लोन लिया है, तो 1 लाख का सामने जो 10,000 जो इंटरेस्ट जो गया था वो इंटरेस्ट भी ऐड करके ये कैरी फॉरवर्ड किया. सेम वे इसमें 3 लाख का लोन लिया था पार्टनर बी से, और 30,000 उसका लोन इंटरेस्ट था, टोटल मिला के 3,30,000 पेमेंट करने का है उसको. सेम वे एनी फ्रॉम लोन टेकन फ्रॉम एनी आउटसाइड एजेंसी, अगर समझो कितना भी, अगर 5 लाख देने का है उसका 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 50,000 देने का है, अगर 31 मार्च में अगर मार्च तक उसका पेमेंट हो चुका है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओनली 5 lakhs विल बी कैरीड फॉरवर्ड. एंड इफ अगर 31 मार्च में पेमेंट नहीं हुआ, उसका पेमेंट अगर बाद में देने वाला है, 1 अप्रैल के ऑनवर्ड्स वो पेमेंट है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में पेमेंट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करने वाला है, तो उसका एंट्री कैरी फॉरवर्ड करना होगा 5 lakhs प्लस 50,000 इंटरेस्ट, 5,50,000, तो टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा? 5,50,000. अंडरस्टूड? नो द डिफरेंस? सिंपल है, थोड़ा लॉजिक माइंड अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो दिस वे दिस इज मेंटेन्ड. सो 10th पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर एंट्री 3. Here adjustment and entry 1 क्या था? interest on capital, or added this thing, and if under fixed method में रहेगा interest on loan taken, uh, 10,000 और 30,000, ये ऐसा एंट्री ये किया था. ओके, ये इंटरेस्ट का पार्ट इधर दिया था, और इधर खाली ये 1 लाख और 3 lakhs कैरी फॉरवर्ड करेगा, ऐसा लाइक दैट इट इज़. ओके, और इंटरेस्ट का एंट्री इधर ये करेगा. अगर ये इधर एंट्री नहीं किया तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में रहेगा, तो ये ऐसा मेथड में ले लेगा, और उसको ये जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करने का है विथ इंटरेस्ट. ओके, अगर नहीं है तो ये जो अगर समझो ये पेमेंट ऑलरेडी कर चुका तो 1 लाख की कैरी फॉरवर्ड करेगा, या ये टोटल पेमेंट उसको करना पड़ेगा 1,10,000. सेम वे ऐसा 3 lakhs है, 3,30,000 अभी देना पड़ेगा, बिकॉज
This is taken to the it is debited to the profit and loss account, and second effect given in the liability side of the balance sheet, or liability side of the or credit side of the partner's current account. इधर और अगर ये ऐसा मेंटेन करेगा तो ऐसा करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं रहेगा तो ऐसा ऐड करना, ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ 11th एडजस्टमेंट, लोन गिवन, मतलब कभी कभी कंपनी क्या होता है, सरप्लस फंड रहेगा तो कुछ किसी को भी लोन दे देते, किसी को फंड्स का ज़रूरत देगा तो देता है. इफ इट इज़ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर कुछ रहेगा किसी मोस्टली लोन देता नहीं है, लोन लेते हैं देता नहीं है, लेकिन इन केस अगर समझो दिया, किसी को ज़रूरत पड़ा तो दे दिया, कोई फ्रेंड हो या कुछ हो या कोई वेंडर हो, बोलेगा मुझे इतना फंड्स का ज़रूरत है दे दो, थोड़ा टाइम के बाद मैं देता हूँ, तब तक आप इंटरेस्ट ले लेना करके बोलेगा तो भी देते हैं. या कभी कभी कुछ इमरजेंसी, कुछ बड़ा ऑर्डर आ गया, फर्म के पास पैसा नहीं है, तो ऑर्डर एक्सिक्यूट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो पार्टनर से लोन लेते हैं टेम्पररी, फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए या 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए लोन ले लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं. तो क्यों आप इंटरेस्ट लूज़ करने का, आपको इंटरेस्ट दे देगा करके कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट बोलेगा, इंटरेस्ट वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहेगा तो वो इंटरेस्ट दे सकते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, तो ये ऐसे कुछ 5 लाख लोन लिया था, उसके ऊपर अगर समझो 8%, मे बी मीन्स पार्टनरशिप डीड में अगर 5% मेंशन किया रहेगा तो 5%, इफ इट इज़ 2% तो 2%, इफ इट इज़ 10% 10%. मैंने इधर फॉर कुछ ऐसा लिया है और अस्यूम किया है 8%. तो 8% से 5 लाख में जो इंटरेस्ट जो दिया है तो 40,000, और बी का जो है इंटरेस्ट 48,000, टोटल 88,000. समझो ये जो इंटरेस्ट कंपनी जो लोन दिया है पार्टनर को या कोई आउटसाइडर को, इंटरेस्ट में जो दिया है, जो लोन दिया है, और लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आता है, वो दैट इंटरेस्ट इज एन इनकम टू द बिजनेस. सो लेट्स सी हाउ द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड. See, 11th point, you can correlate with this in future. Suppose if you want to understand each entry का ना 2 इफेक्ट हर जगह पे, मीन्स फर्स्ट इफेक्ट इधर लिया है 11th और सेकंड इफेक्ट इधर दिया रहेगा. सी लाइक दिस, ओके. So since it is an income to the firm, interest on loan given 40,000 A को दिया है, like this, 40,000 A को दिया है, 48,000 B को दिया है, 48,000 B. सो टोटल ये 88,000. अगर समझो 31 मार्च तक उसका पेमेंट कर चुका है ऑन द इवनिंग, जो सब एंट्री का ये 31 मार्च को लोग ने डिसाइड किया चलो इंटरेस्ट जितना भी है वो पेमेंट कर दो करके बोल देगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहने दो, दैट वी विल पे लेटर. तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या करेगा, इंटरेस्ट अमाउंट वो 31 मार्च को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा बाय इंटरनेट बैंकिंग, वो पेमेंट करेगा. तो दिस एंट्री, द सेकंड एंट्री, इसका इफेक्ट जो यहाँ का एक फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकंड एंट्री का इफेक्ट, एक डेबिट के सामने क्रेडिट होना चाहिए, दैट इज़ अ डबल एंट्री बुक सिस्टम. सो उसका जो सेकंड इफेक्ट बैंक में गया, ऑलरेडी बैंक से जो पैसा निकल गया ना, अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया. अगर वो नहीं दिया है तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, लाइक दिस. इसका सेकंड इफेक्ट इधर बैलेंस शीट में देना पड़ेगा. कोई भी एंट्री पास करते में उसका डबल इफेक्ट होता है, वेदर इफ इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पेमेंट हो चुका है तो एक एंट्री डेबिट जो एक्सपेंडिचर का एंट्री आ जाएगा, या नहीं तो इनकम का एंट्री क्रेडिट हो जाएगा. उसका पेमेंट अगर आ चुका है तो बैंक में आया रहेगा, या पेमेंट अगर देना करेगा दे दिया तो उसका इफेक्ट ये में आया रहेगा. अब ये समझो ये 88,000 का, ये 88,000 लोन इंटरेस्ट पार्टनर को मिला, फर्म को मिला. समझो 1 लाख बैंक का बैलेंस था और 88,000 का इंटरेस्ट आ गया. समझो 31 मार्च को सामने वाला अपने को जो कंपनी को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफ़र दिया है, तो क्या करेगा, दिस प्लस दिस 1,80,000 बैंक बैलेंस हो गया. अगर ये जो अगर नहीं दिया है तो 1 लाख की बैलेंस रहेगा बैंक में. बैलेंस एज पर बैंक कितना आएगा, 1 लाख. अगर समझो ये पेमेंट आ गया है 31 मार्च को तो बैलेंस एज पर बैंक कितना होगा, 1,88,000. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर समझो नहीं दिया है, वो 31 मार्च के बाद में ही मिलने वाला है, तो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट एंट्री इधर आ गया.
इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, 5 lakhs प्रिंसिपल अमाउंट था, 4 lakhs इतना, इसके 40,000 इंटरेस्ट है, तो दिस इज एड इंटरेस्ट 5,40,000 हो गया. ओके, सो ये कितना हो गया, ये लोन, दिस इज, ये जो इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया है, 5 लाख कंपनी को जो लोन दिया है वो ऐसे लेने का है, पार्टनर ए से, और 6 लाख इससे लेने का है, और इंटरेस्ट भी पार्टनर ने दिया नहीं है, तो पार्टनर का क्या होगा, वो ऐड करेगा 40,000, तो 5,40,000 उसे लेने का है पार्टनर ए से, और 6 lakhs प्लस 48,000 इंटरेस्ट, 6,40,000 ए से लेने का है. यू गॉट इट. तो एक एंट्री इधर आ गया, एक एंट्री इसका जो है, इसका एसेट साइड मीन्स वो डेबिट इफेक्ट इधर आ गया, और इधर क्रेडिट इफेक्ट, इधर क्रेडिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो 2 इफेक्ट तो हो गया है. ओके, अच्छे तरह से समझ रहे हैं ना, समझो अगर समझो ये अगर बैंक इधर तो क्रेडिट एंट्री आ गया, और समझो उसने जो बैंक अकाउंट, समझो इधर बैंक बैलेंस करके बोलेगा, करंट अकाउंट में, करंट असेट्स में आता है ना बैंक अकाउंट, ऐसे 2 एंट्री आता है. तो बैलेंस एज पर बैंक अगर करंट अकाउंट में रहेगा, तो समझो ये, समझो 1 लाख रहेगा, समझो, ठीक है, या नहीं तो ये समझो एक 5,000 रहेगा, समझो फॉर आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर रहा हूँ. समझो ये 40,000 और 48,000, 88,000 दे दिया, तो इधर नहीं आएगा, ठीक है. समझो मैंने ये एंट्री यहाँ से निकल रहा हूँ, तो वो क्या होगा, 5 लाख ही कैरी फॉरवर्ड करेगा, 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, ये 31 मार्च को पार्टनर ने ट्रांसफ़र कर दिया, समझो. तो क्या होगा, ये 1 लाख तो ऑलरेडी है, ये इधर था, उसके साथ साथ में 88,000 आके ये कितना होगा, 1,88,000 ये आएगा, 1,88,000, ठीक है. दैट इज़ अ एंट्री. एंड इफ़ इट इज़ नॉट पेड, तो वो क्या करेगा, वो उधर ऐड कर लेगा, इधर कैश और बैंक, ठीक है. तो इधर क्या होगा, इधर ये होगा एंट्री, ये 5,40,000, इधर ये होगा 48,000, 5,48,000, 6,48,000. दिस इज द 11th एंट्री एडजस्टमेंट. नाउ 12th entry we will discuss in our next class. Okay, तो जो भी है, जो आप हम लोग ने जो सीखा है वो अच्छा तरह से प्रैक्टिस करो. समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देख लो, मैंने पूरा कोरिलेट किया हुआ है, समझो. अभी समझो जो भी कितना भी हम लोग ने एंट्री किया है, सबका जो मैंने कोरिलेट किया है. सी फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक एक नंबर 1 दिया है, इधर अपना ये इसका जो पॉइंट के हिसाब से देख लो, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर प्रिपेयर, इसका नंबर के हिसाब से देख लो. तो जो भी, और इसका ये जो एडजस्टमेंट एंट्री में मैंने पूरा इधर लिखा हुआ भी है, ठीक है. सो नाउ टुडे वी विल क्लोज इट टिल, बिकॉज ज़्यादा ये एक्सप्लेन करेगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा. आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज, ठीक है. सो एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा इधर मैंने मेंशन किया है, डेट वाइज कितना का भी किया है. 5 पॉइंट डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में और 4 पॉइंट डिस्कस किया था. आज खाली 2 पॉइंट डिस्कस किया है. तो 10th में भी एक 3 एडजस्टमेंट था, मतलब टोटल 4 एडजस्टमेंट का हम लोग ने किया है. तो उसका ये क्या जितना भी है, अभी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री फर्स्ट इफेक्ट इधर दिया, सेकंड इफेक्ट किधर दिया, देखो बैलेंस शीट में इधर पॉइंट नंबर 1. नाउ पॉइंट नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट में, पॉइंट नंबर 2 इधर है सैलरी
आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इधर 6 लाख ये ऐड किया था, तो ये 6 लाख का एंट्री कहाँ किया है, सेकंड इफेक्ट देखो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में सेकंड एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी. So you understood this 11 points. Okay. Now the adjustments from 12th we will discuss in the next class, because if it is stretching too much, you will not be able to understand. Okay. So today let us conclude. Okay. So we have discussed till 11th point. For your better understanding, I am going few points only, because these points you should understand. ये जो important adjustments जो है ये आपको अच्छा तरह से समझना चाहिए. Okay. I thought we will discuss it till 16 points today, but it's taking time, so I am going slow and to make you understand better. So let's see now. Let us conclude. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again. पूरा पॉइंट वाइज मैंने लिंक किया हुआ है, मैच किया हुआ है. एक डेबिट का एंट्री रहेगा तो एक क्रेडिट का एंट्री इफेक्ट, या इफ इट इज़ अ क्रेडिट इफेक्ट अगर उधर बैलेंस शीट में लेगा तो लायबिलिटी साइड में उसमें से उतना इसका एंट्री पास किया रहेगा लायबिलिटी साइड में, या नहीं तो असेट साइड में उसको माइनस किया रहेगा. और उसका एक डेबिट का एंट्री अगर ट्रेडिंग में किया रहेगा तो उसका क्रेडिट का एंट्री बैलेंस शीट में, या नहीं तो असेट साइड में से रिड्यूस किया रहेगा. इफ़ इट इज़ ए क्रेडिट एंट्री इन द प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, उसका जो मैचिंग जो है उसका डेबिट असेट साइड में कुछ एंट्री होगा बैलेंस शीट में, या नहीं है तो लायबिलिटी साइड में उसने माइनस किया रहेगा, डिडक्ट किया रहेगा. सो मैचिंग किया हुआ है तो कोरिलेट कर सकते हैं आप लोग, आगे फ्यूचर में भी है ना वो आपको कोरिलेट कर सकते हैं. If you don't understand, watch again and again, because I want my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark. Most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. Please read again and again. Learn and practice to achieve your life's goal. ये प्रैक्टिस करेगा, कुछ समझ में आया नहीं रहेगा तो बार बार देख लीजिए आप, पॉज करके या पीछे ड्रैग करके, या कुछ बार बार रिपीट करके देख सकते भी कर सकते हैं. और सब लिंक किया हुआ है कैसा है उसका एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री होता है करके. सो help each other to grow together for a better India. I request you all to share the video classes to reach more and more people, so that many students and the public can take the benefit. बहुत जन है इसको ये जो क्लासेस का ज़रूरत पड़ता होगा, कुछ क्लास में सिखाते हो समझ में नहीं आता होगा, या कोई डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स है, या करस्पॉन्डेंट स्टूडेंट्स एजुकेशन स्टूडेंट्स है, या कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और क्लासेस में इतना ये नहीं हो रहा है, तो ये मेरा क्लासेस यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए आप मैक्सिमम शेयर कर लीजिए. जिसको अगर इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए वो ये क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं. तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है शेयर कर लीजिए. ओके, हेल्प ईच अदर. Thank you for your attention.